guys, today I'm at Radisson Blu Resort and Spa, which is in Karjat, and we have been, given a warm welcome. As you can see the tilak on my forehead, and they have served us a welcome drink. So come and let's explore this resort. Yeah, architecture काफी beautiful है. You can see the gate over here. And this is the whole area which is in mid of Sahyadri mountains here. And we have a Ulhas river nearby. So I'll show you that also. Let's explore. Guys, I'm sitting in the lobby area, and as you can see, there's a reception over there. And this lobby area is so huge. So let's take a room tour. So जैसे ही आप एंट्री लेंगे यहाँ पे मुझे डायरेक्टली ये वॉशरूम दिख गया है. So if I have to show you around here. यहाँ पे वॉशरूम में ये मिरर है बड़ी सी. And then ये यहाँ पे शैम्पू and all that kit रखा हुआ है पूरा. And this is hair dryer. And this is how it is, and this is the shower area. यहाँ पे वॉशरूम से जैसे ही आप निकलेंगे ये आपको एक कंपार्टमेंट दिखेगा. सो if I have to show you compartment as well, तो यहाँ पे ये हमें आयरन दिख रहा है, और फिर ये है शायद वैल्यूएबल आइटम्स आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो सेफली. एंड देन दैट्स अबाउट इट. तो यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट है जस्ट लाइक दैट. तो वन कंपार्टमेंट लाइक दिस. फिर यहाँ पे कॉफ़ी मेकर वगैरह है. सो एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री शायद बिस्किट की बॉटल है यहाँ पे. एंड दिस इज हाउ द रूम लुक्स फ्रॉम इनसाइड. Wow, this is nice. If you see the ceiling, this is nice, and it is having vintage fan in the middle, and this is looking lovely. Wow. So यहाँ पे दो इंटरकॉम है. आप सर्विस डेस्क पे यहाँ पे कॉल कर सकते हो. ये स्टडी टेबल है. दिस इज सिटिंग एरिया यहाँ पे. So lovely. So अभी हम बाहर बालकनी देखते हैं. So this is my balcony view. So right in front of our room is a huge swimming pool. So we are now going towards a kids play area.
हॉल एरिया में जहाँ पे वेडिंग इवेंट्स ये सब सारे इवेंट्स होते हैं। तो चलो सो दिस इज जस्ट अ आउटर एरिया। एक्चुअल हॉल अभी हम अंदर गेट की तरफ से जाएंगे। This area can cover around 600 or 700 people. यहाँ पे हमने बिरयानी ऑर्डर किया है। लेट मी टेस्ट इट। काफ़ी गर्म है। स्पाइसेस का एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसमें। अच्छा है काफ़ी। Now we are going to fun zone, so let's play some games. See the power of Karjat. Didn't go there. This is Thai curry. This is steamed rice. So let's indulge. Good morning guys. तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैं रेडी होके यहाँ पे बैल्कनी एरिया में थोड़ा व्यू एंजॉय कर रही हूँ। और व्यू अगर मैं बता दूँ तो मेरे वहाँ पे वो सामने वो पूरा स्विमिंग पूल है, और ऊपर की तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो वो पूरा यहाँ पे माउंटेन एरिया है। तो अभी रेडी हो गए, हम एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपर्टी को, और उसके पहले हम ब्रेकफास्ट को जाएंगे। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे बुफे ब्रेकफास्ट में क्या है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का बहुत सारा आइटम्स अवेलेबल है। मैं तो कंफ्यूज ही हो गई मुझे लेना क्या, तो मैंने थोड़ा सा ही बहुत लिया है। इफ़ यू सी माई थाली दिस,
तो ये बहुत ही कम डिशेस मैंने अभी के लिए लिया है और मैं फिर से जाके अभी और ऑप्शन फिल करूँगी और खाऊँगी और फिर से दिखाऊँगी, तो लेट्स सी। Goes in my tummy. Complimentary है, तो you can just roam around this property on this bicycle. So अभी हम यहाँ पे पूल एरिया की तरफ है और ये पूरा स्विमिंग पूल और क्या लश ग्रीनरी है इधर सामने और मस्त व्यू है एकदम। और ये मैंने कल ही इंजॉय कर लिया था, मैंने कल काफ़ी स्विम किया है यहाँ पे, तो आज मैं नहा धो के जस्ट पूल एरिया दिखाने आई हूँ। यहाँ पे आप आराम से ऐसे सो सकते हो। पूल के साइड में ही गार्डन एरिया है और अगर आप देख पा रहे हो ये कितना मस्त लुक है यहाँ पे और एकदम आई कैची है। इफ यू सी दैट टॉप, आई जस्ट लव्ड दैट। और ये सारे स्टैंडर्ड एंड डीलक्स टाइप ऑफ कैटेगरी वाले रूम है। दे ऑल्सो हैव अ स्वीट रूम ऑप्शंस अवेलेबल और जिसकी बैल्कनी काफ़ी ह्यूज है और उसको लग के ही यहाँ पे उल्लास रिवर व्यू भी है। सो चलो चलते हैं देखते हैं। बैल्कनी से खड़े होकर पूरा एंजॉय कर सकते हैं। आप उल्लास रिवर का व्यू एंजॉय कर रहे हो। ये है सह्याद्री माउंटेन के बीच में, लश ग्रीनरी है, बर्ड चॉपिंग हो रही है, मस्त एकदम मज़ा आ रहा है। Short a little. Massage room, and here is everything. As you can see, here is my bathrobe, and this is my things to carry. And then I'll change and come back, and we'll show you how I feel once I come out. So bye for now. So I'm ready to get my massage now. So I hope it will be a relaxing one. So let me get into that. So guys, I have just had an amazing and relaxing spa right now, and it was deep tissue massage. So now I'm just sitting here and I had my steam and bath, and now they'll be serving us with a herbal tea. So here comes the herbal tea which I'm gonna have now. So this was my first massage ever, so cheers to that. एंड अभी मैं बग्गी पे यहाँ पे बैठी हूँ और यहाँ पे ये हमें गाइड करेंगे कि क्या है प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं कौन क्या एक्सप्लेन करते हैं।
ये काफ़ी ह्यूज प्रॉपर्टी है, 19 एकर्स में है, तो उसके लिए हम ये पूरा प्रॉपर्टी इसी पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये अभी हम विला की तरफ जा रहे हैं। ये पार्किंग एरिया के उस साइड में टर्फ है जहाँ पे आप खेल सकते हो। तो ये रहा टर्फ एरिया पूरा। और आज के लिए बस इतना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जगह के साथ। अंटिल देन बाय, टेक केयर।